Second week of February, a bill has been passed by the Parliament, that is Public Examination Act 2024, that is for prevention of the unfair means। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स के लीक होते हैं और जो चीटिंग होती है एग्जाम में, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है ताकि चीटिंग ना हो। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इसी एक्ट के ऊपर है कि क्या इसमें प्रोविज़न है और इससे कैसे चीटिंग को रोका जा सकता है, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। और हमारे जो डिस्कशन है आज का, जो डिस्कशन में पैनल मेंबर्स हैं, दे आर ऑल द सीनियर फैकल्टीज ऑफ नेक्स्ट IAS, जिसमें मोरल इश्यूज़, एथिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ एंड पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर हम डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को या किसी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना हो तो किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शिक्षा के स्तर को ख़राब कर दीजिए और चीटिंग अलाउ कर दीजिए एग्ज़ाम में, उसी से देश पूरा बर्बाद हो जाएगा या राष्ट्र पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उस कथन को अगर हम आज देखें तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा ना होने की वजह से उनका पूरा सामाजिक स्तर गिरा हुआ है। तो कुछ मैं इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन में। सो द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली, एक तो यह है कि दिस इज कॉल्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल। जैसे कि UPSC, SSC, RRB, NTA, ऐसे बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, ये उनके लिए है। इसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन कि इन्वेस्टिगेशन विल नॉट बी डन बाय द लोअर रैंक ऑफिसर। इसमें DSP लेवल का ऑफिसर या फिर ACP लेवल के ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो CBI इंक्वायरी भी करा सकती है। इसमें जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 9, वो पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तभी ये जाकर के रुकेगा भी। लाखों की तादाद में बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, कोचिंग में फीस देते हैं, साल साल भर मेहनत करते हैं और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया। जरा सोचिए कि ऐसे लोगों पर क्या बीतती होगी। तो जो इसमें पनिशमेंट का जो लेवल है, तो 3 कैटेगरी में हम देख सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1, इफ ए पर्सन इज इन्वॉल्व, कोई एक व्यक्ति, तो उसके लिए 3 ईयर टू 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 3 ईयर एंड अप टू 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख तक का उसमें फाइन है। दूसरा है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि कोई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, अगर उसकी तरफ से क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो पहली बात तो उसको 4 साल के लिए बैन किया जाएगा, 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं, उसके जो उसका सीनियर मैनेजमेंट है या उसके डायरेक्टर्स हैं या इंचार्ज हैं, उनको 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। थर्ड कैटेगरी है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है जिसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, तो मिनिमम 5 ईयर्स से लेकर के अप टू 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल, और साथ में 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों ये जो बिल अभी पास हुआ है फरवरी में 2024 में, और ये गजट में नोटिफाई भी हो चुका है, तो ये काफ़ी टफ और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बल्कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसे बिल पास किए हैं जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अभी हम लोगों ने देखा है रिसेंटली कि यूपी में जो पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अभी पेपर लीक हुआ है। ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं कि ARO का भी एग्जामिनेशन का पेपर शायद लीक हुआ है। इस तरह के भी एलिगेशंस हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में है। CSIR का ASO का एग्जाम हुआ था 2024 में, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। राजस्थान में तो 2015 से 2023 के बीच देयर आर 14 क्वेश्चन पेपर्स विच वर लीक्ड। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भी मोर देन 10 केसेस हैं, एंड देयर हैव बीन केसेस ऑफ द UP टेट, PET, B.Ed एंड मैनी एग्जामिनेशंस जहां पर क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं। इन लास्ट 5 to 6 years around 70 cases have been recorded in India where the question papers have been leaked। अब इसके पीछे क्या मकसद होता होगा? ऐसे बहुत इक्के दुक्के छात्र होंगे जो इस रॉन्ग तरीके से या गलत तरीके से एग्जाम को पास करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से
जो सभी वो छात्र जो बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से इस एग्जाम को लिखना चाहते हैं और लिखते हैं, वो सफ़र करते हैं। तो एग्ज़ाम कैंसलेशन के जो केसेस हुए हैं उनमें एक यूपीएससी का भी एक एग्जाम्पल है। दैट वाज द एग्ज़ाम ऑफ 1991। जी हाँ, यूपीएससी का अपने इतिहास में सिर्फ एक ही बार पेपर लीक हुआ है 1991 में, और वो भी जो प्रिंटिंग प्रेस रांची में था वहाँ से लीक हुआ था। और उसके बाद वो एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया गया। यूपीएससी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेयर एग्जामिनेशन बॉडी। और ये एक सिंगल केस आया था रिकॉर्ड में। स्टेट एग्जाम्स जो पीसीएस कराए जाते हैं, तो पीसीएस में एमपीपीएससी का भी एग्जाम का पेपर लीक हुआ, एआईपीएमटी का भी पेपर लीक हो चुका है, यूपीपीसीएस का भी पेपर लीक हो चुका है, एसएससी सीजीएल का तो वेल नोन है, 2017 में यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। गुजरात में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, 14 इंसिडेंसेस। कर्नाटका और बिहार के भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्ट बनाना पड़ा, और ये एक्ट रिक्वायरमेंट थी। और इस एक्ट के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी में एग्जाम के लिए इस डिस्कशन से क्या आपको मिलेगा, वो आपको आज डिस्कशन के दौरान समझ में आएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्कैम्स की जो पहले हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर के लीकेज की वजह से। जैसे उसमें से एक वेल नोन है व्यापम स्कैम। और व्यापम स्कैम आप हम सभी जानते हैं 2013 में बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का ये स्कैम था, जिसमें 13 सेपरेट एग्जाम जो 40 पीपल डाइड इन मिस्टीरियस कंडीशंस, जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है कि उनकी डेथ क्यों हुई। जिनके ऊपर एलिगेशंस थे, दोज डाइड, एंड मोर देन 2000 सस्पेक्ट्स वेयर डिटेन्ड and arrested. Ultimately, in 2017, Supreme Court cancelled the degree of 634 doctors, जो पीजी डिग्री थी, जिसके लिए एलिगेशन था कि उनको पैसा लेकर के पीजी में एडमिशन दिलाया गया, 50 लाख की उनको रिश्वत दी गई, ऐसा एलिगेशन था। एंड फाइनली दिस हैपेंड। तो दोस्तों, ये जो केसेस हुए हैं पास्ट में, वही एक ऐसा रीजन है कि दैट फोर्स गवर्नमेंट टू enact the law. So now I will come to KM Pati ji. My first question to you is that what is the aim of this act, and can this act help in creating the integrity of among the people? Yes, absolutely. Now I'll pick on two words. Now the focus of the act is two words, that is unfair and means. I will not talk about means. I'll leave it for Prince to talk about means. I'll talk about the concept of fairness. Everybody talks about means, everybody talks about malpractices, but what is most important is exam systems. The fundamental value of any exam system is fairness. And now the question is why there is so much stress on the value of fairness. And this is something most students miss also, the concept of fairness. And this value of fairness is something which is important for your ethics exams also. Let's leave the exams aside. Let's keep the exams aside. Let's talk about fairness. How exam systems ensure fairness. When I talk about fairness in exam system, it's a reciprocal process. On one side you have students, on the other side you have examining body. Now when I say fairness, it involves both the people. It involves students, at the same time it involves examining body also. Now the students expect the examining bodies like UPSC and other bodies to conduct the exam fairly. On the other side, the examining bodies like UPSC and all these organizations, they expect the students to take the exam in a fair manner. So fairness is expectations from both sides. And when both sides fulfill the expectations, that's when the exam integrity is maintained. But sadly, what has happened over the period of years is the exam integrity is being questioned. The sanctity of examination is lost. And if you see the entire exam process, we see violations all over. Before the exams, you have leakage of papers. During the exam, you have cheating, you have external help. And I'm sure a couple of years back in UPSC also there was a case study on external help to students. So during exam, it's external help. Now, after the exam gets over, the manipulation of results. So, at every stage, the value of fairness is compromised. No wonder government has picked it up
And government has made very clear through the act that my objective of this whole act is to ensure fair play. See, life is all about fair play, and exams are all about fairness. Now, here comes one more thing. If you look at public examinations, all these examinations focus on identifying merit, identifying ability. And to identify ability and merit, every student should have a fair crack. Every student should have a fair chance. But actually, hota kya hai? Because of these malpractices and unfair means, hota kya, this actual student suffers. Yes. So that's the issue. So the objective of the whole act is to ensure fair play, is to ensure value of fairness. The purpose is to maintain the exam integrity. So that's the purpose of this. And I'm sure this act will get to that. In fact, it's very commendable that government actually has stepped in and tried to focus on this word fairness also, the value of fairness. Here, my question is that what makes a student or pushes to go for the unfair means? So this is a very long question, but I'll try to keep it a little short here. Now, the moment you say unfair means, what tempts a student is multiple factors. In fact, there are three different factors that are at play. One is the students themselves. Like students get tempted to practice something or get into something called questionable means. It's because of, if you look at students, students have high ambitions, high aspirations, but at the same time, the abilities are not there. So there's a kind of a mismatch between abilities and aspirations. That also comes in. That's one. And second interesting factor is the parents' expectations. Parents expect too much. And in fact, what is surprising is students have this mortal fear of failing in an exam. Right. So it's this that pushes them also. And one more thing which I see that there are some institutions or there may be some antisocial elements who actually provoke to these students that they can achieve their success through the easy means. Yes. Oh, by the way, sir, that's a good one. Now, there are a lot of dubious institutions. You know, a lot of these institutions, for them, results matter. They focus on getting exemplary results. So they also sometimes just nudge the students. यार कर लो, क्या फर्क पड़ता है? एक बारी की तो बात है. Life बन जाएगी. They just nudge them. And students also get tempted because they know it's a high stakes game. So these dubious institutions also have a role to play. So you cannot blame the students alone. It's these dubious institutions also. They also contribute. And lastly, this is a very interesting one. Every exam system has bad apples. When I say bad apples, कुछ ऐसे लोग भी होंगे system के अंदर उनको लगता है चलो यार बच्चों की desperation का फायदा उठाया जाए. So they are within the system, exam system, and they want to make a quick money. So they also prey on these students. So when there are so many people to help the students in an unfair way, so obviously कहीं ना कहीं students को भी लगता है यार चल यार एक बार करके देख ही लेते हैं, सब तो कर ही रहे हैं, हम भी कर ही लेते हैं. The justification also comes in that way. And what exactly happens? So let us say one student has invested money to get the paper. Now he has invested a lot. So now what he tries to recover his money by selling to the other people at lower cost, maybe more number of people, and this creates a chain. And that's how it gets the whole thing, the whole papers leaks in a very mass manner. Yeah, recently this UPPCS constable paper which has leaked, in that it came into knowledge that ultimately the paper was sold in 100 rupees over the telegram. I mean, this is what the whole purpose of exam is defeated. अब आप ये देखिए ना कि इसमें कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया. Yeah, coming to now Prince, what reasons you see why these cheating cases are rising? सर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सोसाइटल वैल्यूज जो हैं उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कहीं ना कहीं बदली है. फोकस जो है वो अभी एंड के ऊपर ज़्यादा हो गया है मीन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम मीन्स की बात करते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो मीन्स आपके हैं किसी नोबल एंड को अचीव करने के लिए वो भी आपके नोबल होने चाहिए. लेकिन क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है, सोसाइटी राइट नाउ डज नॉट केयर कि आपके मीन्स क्या है, दे ओनली केयर कि आप क्या रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट्स को ये भी बताना पड़ेगा और इवन सोसाइटी को भी ये समझना पड़ेगा कि व्हाट यू आर अचीविंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट हाउ यू आर अचीविंग दैट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट. साथ ही साथ जो
बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट्स है, those who are very laborious, sincere, they want to crack this examination through their hard efforts, उन पर क्या बीतती होगी? And what will be the impact in their mindset? सर आई कैन रियली एसोसिएट विद दिस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करता है तो ही और शी इज़ गिविंग लाइक ही इज़ ऑन 100%, और हर कोई अपने सपने लेकर ही यहाँ पर तैयारी करने के लिए आता है, और फिर 100% देने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ब्लेमिंग जो है वो शुरू हो जाती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि 100% देने के बाद भी मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया, तो उसके बियॉन्ड 100% देने के बाद और तो कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर उसको ये चीज़ काफ़ी आगे जाके समझ में आती है कि इट वॉज नॉट हिम और हर हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, इट वॉज बिकॉज द एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज रिग्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है किसी भी स्टूडेंट का, या फिर अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस के अलावा उसकी पूरी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को समझनी भी होगी, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी समझनी होगी कि जो एक्सपेक्टेशन है वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमें एंड के साथ साथ मीन्स जो है उनको भी फोकस करना पड़ेगा, ताकि दोनों ही चीज़ें जो है वो बैलेंस करके स्टूडेंट्स चल पड़े। I'll just add something here. You know, it's not students alone. We live in a culture. हमारा समाज एक ऐसा बन गया है where success is worshipped. Right. So there's a kind of a premium on success, and students nowadays go for that only. Success matters. That's it. And people forget that means also matter, and means in fact is the most important one. Just imagine you're starting a job on a wrong step. You're getting into service with the wrong step, not the right manner. Success is good, but means matter. So Right. it's not only means, it's not only success, means also matter. Correct. I'm coming to Piyush Chaubey. Piyush ji, what are the legal and constitutional dimensions of this bill? This is a very good question, in fact. So, when we come to the legal aspect of it, we are already having few laws which is related to cheating and fraud, basically. But this is a very special law in what terms? Like, it has a clear definition ki what comes under unfair means. And this unfair means is very broadly defined. In fact, those who provide computers and other assistance, they are also part of it, basically. So the definition of unfair means is very broadly defined. This is one of the most important aspect of it. Right. Now, the second important aspect of it, ki as we are into the era of technology, and most of the leaks, most of the cheating happen through the technology. So there is a specific provision of National Technical Committee, basically. That National Technical Committee will provide insight ki how exams should be conducted, what should be the technical procedure of conducting the examination. So now the you can say government machinery conducting exams will be foolproof against any kind of technological based fraud. And the most important aspect of it, I would say that ki central agency will investigate, that will be well equipped like CBI or any other central. This is something very big. I mean, it shows that the government is taking the things very serious. It's a very serious thing ki they are ready even to have a central agency which will investigate with all well equipped technology, with all sort of knowledge, expertise in that particular field. I would add on one more thing, basically. Here, it is not only against the individual, you know, they specific come with the idea of organized crime, basically. Right. And even the punishment for the organized crime is very severe. That start from up to the 10 year, and the fine goes up to the 1 crore. Right, right. So this is something very big in legal aspect what they mention it. यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों कि जो कैंडिडेट है मीन्स स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, इफ ही इज फाउंड इन्वॉल्व, तो उसके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए वो अथॉरिटी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, लेट अस से यूपीएससी, दैट कैन डिवार द कैंडिडेट फॉर द एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो हर स्टेट की या जो टेस्टिंग एजेंसी है दैट हैज़ स्पेशल प्रोविजंस, वो अभी भी हैं, तो वो एप्लीकेबल है। ये जो लॉ बना है ये उनके लिए है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं और जो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ये काम करते हैं। तो एक बात तो आपको ये समझना है
दूसरा ये भी समझना है कि अभी जो लॉ है एज ऑफ नाउ, या जो इस लॉ के आने के पहले, उस समय दो ही सेक्शंस होते थे। एक होता था 420 चीटिंग का, और दूसरा होता था सेक्शन 120 क्रिमिनल ऑफेंस का। तो ये बेलेबल होते थे। लोग सोचते थे कि क्राइम करेंगे और पैसा कमाएंगे और कुछ दिनों बाद निकल के भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो आया है लॉ, इस एक्ट के अंदर ये नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। ना तो बेल होगी, ना आप सोचें कि अगर सजा की बजाय पैसा देके काम हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। So this is very important in this law, and this is really need of the time, and this may help in curving down the such cheating cases and the paper leakage cases. Coming to Piyush again, क्या इस एक्ट में कोई ऐसी चीजें हैं जिसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? देखिए, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन तो है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन है बेसिकली। मैं उसके लिए एक डेटा देना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में 41 डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे इंस्टांस, डॉक्यूमेंटेड इंस्टांस हैं कि 15 स्टेट्स ने ऑलमोस्ट 1.04 लाख पोस्ट के लिए और 1.4 करोड़ एप्लीकेशंस को रद्द किया बेसिकली। अब ये डेटा अपने आप में बता रहा है कि अगर इस तरह से एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे, तो सबसे मेजर चैलेंज आएगा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पर। और अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है, तो एक तो ये डिक्लाइन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, और ये सीधा सरकार और पूरे सिस्टम की लेजिटिमेसी पे सवाल खड़ा करता है। राइट। और उससे बड़ी बात क्या है ना कि अगर जो स्टेट है हमारा, स्टेट इज विजिबल थ्रू इट्स सर्विसेज बेसिकली, टेक्निकली बिकॉज ऑफ द स्टेट what services provide to us, we come to know what is exactly state is that. Now it will create a question mark over the credibility of the state itself basically, and the legitimacy, trust deficit, that all will create hamper in a longer term even democracy of this country. Right. I would like to add one more aspect of it basically, कि apart from this aspect, even in last election, it was one of the major agenda of election in Rajasthan election basically. Right, it was. Even in Telangana also it was a major agenda. So it has a lot of political dimension basically. Right. Coming to you Raj now, what are the benefits of this act to the society? Sir, क्योंकि आप तो सोशल इश्यूज के एक्सपर्ट हैं। यस सर, सोसाइटी एज एक्चुअली जो बना है वो एक ट्रस्ट के बेसिस पे बना है। जैसे अगर मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो आई विल अप्लाई अ ब्रेक बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग दैट अदर पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू माई बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो अगर चीटिंग हो रही है एग्जामिनेशन में एंड अ पर्सन इज नॉट फाउंड गिल्टी और नॉट बेसिकली पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, पीपल ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट विल बेसिकली नो मोर देयर। सो जैसा पीयूष सर ने कहा उसी को एक्सटेंड करेंगे कि दिस लॉ विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, दैट पीपल इन द सोसाइटी विल हैव मोर basically trust in the agencies who conduct examination and their confidence level will also boost on this examination conducting agency. दूसरा है कि इससे एक सैंक्टिटी ऑफ पब्लिक बेसिकली एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी भी बढ़ेगा। जैसे यूपीएससी की एक क्रेडिबिलिटी है अमंग द बेसिकली डिफरेंट एस्पिरेंट्स, सो दे नो दैट whatever be the mistake that lies with them rather than with UPSC. So same kind of credibility will be created among other institutions. तीसरा सोशल बेनिफिट है कि एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस या कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देगा। एंड लास्टली आई वुड से कि इससे एग्जामिनेशन और एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मेरिट मोर rather than basically resorting to such kind of unfair means. ऐसे कौन से वो सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग ऐसा अनफेयर काम करने के लिए या स्टूडेंट प्रवोक होते हैं? सर मैं प्रिंस सर की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि और पति सर की बात को कि उन्होंने कहा था कि सोसाइटी का अब एक वैल्यू जजमेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे हो रहा है, दैट दे वैल्यू एंड्स मोर या सक्सेस मोर रेदर देन मीन्स। तो एक तो ये कारण है कि लोग आजकल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं विदाउट बेसिकली लुकिंग इनटू इनवर्ड्स कि आर दे डिजर्विंग टू अटेन दैट सक्सेस और नॉट। सो बहुत सारे सोशल फैक्टर हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर है पीर प्रेशर, दैट अगर किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाता है तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्रेशर ऑन द पर्सन कि मेरा भी होना चाहिए बिकॉज माई फ्रेंड इज गेटिंग सिलेक्टेड। दूसरा है कि अगेन देर इज इनएडिक्वेट सुपरविजन ऑल्सो। तो मेनी पीपल थिंक दैट इट इज रिस्क वर्थ टेकिंग एंड एज पति सर हैज सेड कि अगेन फैमिली का एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। सो देर इज अ सेइंग कि बिहाइंड एवरी करप्ट ऑफिशियल देर इज अ ओवर एम्बिशियस फैमिली, and same applies here that behind a student who is sitting in the examination there is over expecting family from that student. And last
families celebrate success, Correct. but at the same time, family should also prepare the child to face failure also Failure once in a also. while. But Right. which is So, missing. which is missing. Correct. So that's why the child is stressed out. Correct. Actually, if the target is decided by the family, not by the student itself, aspiration is of the family, not to the student basically. So the effort what student should put to go for that, you But- can say goal basically. यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि it may be the case of 0.01% such students who follow this path, but you see 99.99% students they are suffering. Secondly, when it comes to the family, most of the people may have the parents who can guide them, but there will be still a mass or a group of these students who their parents may not be well educated. Exactly. They look forward for the support from schools, and now it is the education system, whether it is a school or it is a coaching or it is a college, they have to inculcate such emotions and such values in the candidate so that the candidates should not get provoked or they should not think in that dimension. And also, sir, ability to handle the failures. If you can able to handle the success, it is also important to learn how to take care of your failures, because failures only makes you learn new things and make you grounded. तो ये की भी एक लर्निंग हमारे करिकुलम का पार्ट हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो, ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो. दे वुड नॉट रिसॉर्ट टू थिंग्स लाइक सुसाइड और डिप्रेशन और अदर काइंड ऑफ थिंग. तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो सोशल फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अनफेयर मीन्स की तरफ जाने के. राइट. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल प्रिंस आपके लिए है, एथिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि दोज कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू अनफेयर मीन्स, हाउ दे विल कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग. और ऐसे जो लोग जाते हैं अगर गवर्नमेंट सर्विस में, तो आगे चल के वो उनके फिर अनएथिकल एक्ट्स होंगे. सो हाउ डू यू सी दिस? सो द इम्पैक्ट विल बी क्वाइट एडवर्स, बिकॉज अगर ऐसे लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, मान लीजिए कि कोई ग्रुप डी के अंदर भी सिलेक्शन ले रहा है, एंड इफ दैट पर्सन इज पेइंग 5 लाख रुपीज, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? जब वो लोग सर्विस में आएंगे तो डेफिनेटली द फोकस विल बी ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरिंग दैट मनी, कि वो 5 लाख रुपए मैं कैसे रिकवर करूं. चाहे वो करप्शन के थ्रू करेंगे और इट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव वे, डाउरी के थ्रू भी वो कर सकते हैं, या दोनों के तरीके से कर सकते हैं. एंड द प्रॉब्लम विद द करप्शन इज कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज इंडिविजुअल्स टू स्टॉप एट 5 लाख रुपीज, क्योंकि एक बार आपने इसे करना शुरू किया तो फिर आप 5 लाख पे रुकेंगे नहीं. तो ये एक आपका चेंज हो बनता जाएगा, एंड द लाइफ टाइम दे विल बी इन दिस विशियस साइकिल ऑफ करप्शन. तो कहीं ना कहीं हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को देके वी आर लाइक डिस्ट्रॉइंग द ब्यूरोक्रेसी. इसी पॉइंट पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू दी पेपर लीक और चीटिंग इन द एग्जामिनेशन. देयर इज वन मोर डायमेंशन ऑफ इट which is during the interview, and there are many states in which there is backdoor entry. People approach either through the political means or through bureaucrats or through the some touts, or you can say the agents, and they try to get a seat for themselves by paying or by some political sources. That is also equally to be punished. I believe that unless and until all the dimensions are checked and all the leakage points are blocked, this law will be incomplete, and this will be difficult, because a student who is a transparent, honest, hardworking, coming from the weaker section of the society, he cannot afford such dimensions, he cannot afford such means. So the prevention of the this unfair means act should also look on to the dimension, like if there is any political source or that also should be checked, they also should be punished. Then this will get the complete justice. Right. So my next question to you is Piyush, ki how do you see this bill in current context of the Viksit Bharat or in the future Viksit Bharat, ki how this bill will be effective? Okay, before answering this, I just add on one more thing, the legal aspect of it. This law is very good, but technically there is no provision of fast track disposal of the cases, which is equally important. Laws are very stringent. If you come up with the fast track disposal of the cases, so it will become easy to prevent basically. Now coming to this part, Viksit Bharat, I mean, this is a very ambitious program of our Prime Minister by
2047. We are looking forward. And most important part is this entire Viksit Bharat program is youth centric. Right. And if you go with the data, up to the age of 40%, 40 age, 70% of the population is technically youth. Anyhow, they are into the competitive examination. If that particular youth or group feel deprived, cheated, or any way it Right. feel that they are not able to contribute the way they can, so it will be very difficult to realize that aim what our Prime Minister is looking forward. That the famous thing what he said that democracy and demography, and transparency is the key basically. And that is directly related with the youth of people. And this examination, their aspiration to be into the service is directly related. So it is not possible until unless we are able to give path and trajectory to the aspiration of the youth to provide them equality of opportunity, ensure them that institutions are very fair. That is why I believe it is very closely connected with this Viksit Bharat basically. Right. add one more point in that कि what sir is saying कि demographic जो dividend है which India is enjoying, अगर youth is going to dishearten or frustrated, this demographic dividend is going to transform into demographic disaster because youth unrest is what going to create many social problems in the society. Do you think that this law alone will be sufficient to curb such problems, or there is something needed from the parents, family, society, educational institutions to be done for these students? Sir, answer is already there in your question, sir. That law is never a solution for any problem. We have law for child marriage abolition, but child marriages are still rampant. They have law for prevention of corruption. Corruption is still going on. So law, yes, Lowry law is also there. There is still going on in hidden manners. So again, law is going to create a deterrence. It will create an indicator for change, what we want to see. But ultimately, it is the implementation of the law as well as the mechanism through which we can end this menace. Like family has a big role to play. Over expectation and again over pressurizing the kids is something which is not supposed to be done. Thankfully now awareness is generated and families are also learning about their unwarranted expectation. Dusra, school has also played a very important role in inculcating these kinds of values. Again, third one is your society. Society should respect the hard work. Again, society should respect a person basically who has made efforts rather than demonizing failure. We should also consider it as a badge of honor. So all these things collectively will help in longer way to end this menace rather than law alone. In fact, the social norms for the success need to be redefined basically. It should not be only in terms of material advancement. In fact, the family values, social cohesiveness and being with the people, the moral aspect, individual aspect, national morality, these all factors should be considered while defining what we call success, what we call a good life. So the social value transformation is equally important along with the law basically. KM Pati, you teach the ethics. And UPSC few years back added this paper in the syllabus. The basic idea was how this problem of the unfair means can be tackled during the service. How you see or what are the way forward for the society to overcome this problem or to tackle such issues? And do you think that educational institutions like school and colleges, they can play a role? Yes, absolutely. Now, what is interesting is once a person comes into service, then I talk about integrity. It's immaterial. Integrity, honesty starts at school. Until unless I inculcate the values of honesty, a culture of honesty in a child in the school, it will not work after 23, 25 because by that time his value system is all ingrained. It's very difficult to change them. So culture of honesty starts in school. And surprisingly, I'll share something very interesting about it. There are some schools in India, some primary schools in India, in Mizoram, Tamil Nadu and in Kerala, they've been experimenting with something called honesty stores. It's called honesty shops. What these primary schools do is they have a stationery shop in the school and the stationery shop will not have a shop assistant. The stationery items are all kept on the table. There will be a small tray for बच्चों के लिए पैसे डालने के लिए उसमें. And what the child will do is they'll go look at the stationery item, price देख के they are expected to keep the change there. अगर चेंज नहीं है, अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो वहाँ चेंज जो पड़ा उसको लेके भी आ सकते हैं वो लोग. And nobody watches them. And surprisingly, this has been working.
So this is how you can inculcate a culture of honesty among children. And when children learn this at that level, only in future then it works well. And you'll be very surprised when you travel in Mizoram side, on the highways itself you'll find some of these honesty shops. जब वो हाईवे में जा रहे होगे वहीं पर आपको दुकानें मिलेंगी छोटी छोटी, सब्जी सब रखी होगी, एक छोटा सा ट्रे डाला होगा उन लोगों ने, और अगर जा रहे हैं आप सब्जी उठा ली, वो पैसे जितने आप रखे हुए डाल दीजिए आप उसमें, and nobody will watch you. So that's how we can create a culture of honesty. Honesty, integrity cannot be taught to you at the age of 25. It starts early. So we need to talk about, precisely because of this, in the new educational policy 2020, there are 3 sets of values they talk about. And one of the first set of values they talk about is human values, and second set of values they talk about is Indian values. And Indian values, they talk a lot about satya, that is living truthfully. So all these values have to be inculcated there. So Government of India has taken a step forward in 2020 itself with the NEP. So I think law, external control, all that works well. But at the same time, the values a child picks up at level of school, that matters a lot. And we expect these values to be picked up at school and practiced later. जो आपने कहा कि it starts from the childhood, that reminds me कि honesty में there are so many people who will not fit in the honesty, that if we formulate the formula, that most of the people will fail. जब हम लोगों को, हम छोटे छोटे होते हैं, हम जाते हैं कहीं पर, तो कई बार knowingly और unknowingly हमें लगता है कि हम स्मार्ट बन रहे हैं, बट हम डिसऑनेस्ट हो रहे होते हैं. Whether it is a businessman having the tax benefits, taking the advantage of the taxation, और it is a साइकिल पंचर वाला जिसको आप साइकिल के पंचर लगाने के लिए साइकिल खड़ी करके और घर चले जाइए, लौट के आइए तो पता चलेगा 2 नहीं थे 4 पंचर निकले, तो वो बट ठक 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 4 का बिल बना देगा. या फिर आप ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ मंगाइए, यू ऑर्डर्ड समथिंग एल्स एंड यू फाउंड समथिंग एल्स, चाहिए इसको देखिए. तो ये जो डिसऑनेस्टी है ना, दिस इज वाइडली प्रेवलेंट इन मासेस एज वेल एज इन दी ह्यूमंस. अब इसको कैसे रोका जा सकता है? आई थिंक दिस इज व्हाट यू सेड राइटली कि एजुकेशन इज द की. इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, nurturing children, that is very essential. So parents role, teachers role, then society, and finally comes the rule or the law कि अगर फिर भी आप गलत कर रहे हो ना, you have to be punished. और वो जो लोग बैठे हुए हैं, those who are doing it, organized crime, they should be punished like anything. फिर से मैं वो चीज़ रिमाइंड कर रहा हूँ कि destroying any nation does not require the atom bombs or the missile. It only requires lowering of the quality of the education and allow cheating in the examination. Country is destroyed. तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में जो हम बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं और अलग अलग पहलू हो सकते हैं. In this panel, we have the 4 different dimensions of discussion which you have seen: moral dimensions, ethical dimensions, social dimension, and the political or constitutional dimension. So at the end, I would like to introduce Prince Luthra. He is a faculty of the ethics and the K-empathy. He is again the faculty of the ethics. Mr. Raj Rai, faculty of the social issues, Indian society, and Mr. Piyush Chaube, faculty of the Indian polity and constitution. And दोस्तों, मैं हूँ बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर. आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप कमेंट जरूर करिएगा. इफ़ यू हैव सजेशन, प्लीज डू सबमिट योर सजेशन. And we would love to incorporate your suggestions. We try to bring the topics which are of UPSC need. Our focus remains in the examination, but yet we have to cover up some social issues which may be important for everyone's life. So thank you very much. Jai Hind.